अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। तो आज मैं अकाउंटिंग करूँगा और आपको भी थोड़ी सी अकाउंटिंग समझाऊँगा जो कि मुझे आती है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो अकाउंटिंग है पार्ट फर्स्ट की बीएस में भी यूज़ होती है, बीएससी में, बीएसआईटी में और बीएससी डबल कंप्यूटर में मैंने पढ़ी थी ये। तो डबल कंप्यूटर में मैंने पढ़ी थी, उससे जो है ना सर यासिर लतीफ़ साहब ने ही हमें ये पढ़ाई थी, और सर यासिर लतीफ़ साहब की ही ये बुक है। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहावलपुर में या हमारे पंजाब में तो होंगे शायद, बहावलपुर में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हमारा कोई भी नहीं है अकाउंटिंग के लिहाज से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। बिजनेस की डेफिनेशन बताई हुई है। बिजनेस मीन एनी लॉफुल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए जो काम किया जाए वो बिजनेस कहलाता है। मतलब आपका गर्ज प्रॉफिट हो अगर, और आप कोई काम करें, किसी चीज़ की सेल करें या किसी चीज़ की परचेज करें, तो वो आपका बिजनेस होगा। फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। An accountant needs to understand 3 basic forms of business organization which are as under। तो वो कहते हैं अकाउंटेंट को 3 चीज़ें लाजमी आनी चाहिए ताकि उसे बिज़नेस का पता चले। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? व्हेन द बिजनेस इज स्टार्टेड, financed, managed and run by a person, then it is known as sole proprietorship। तो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, वो कहते हैं मैनेज होता है, रन करने के लिए, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इन सच ऑर्गेनाइजेशन द ओनर ऑफ द बिजनेस इज अ सिंगल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एंड अरेंज फॉर टोटल फंड्स ऑफ द बिजनेस। तो वो कहते हैं कि इसका सेम एक ही पर्सन होता है। मतलब अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन उसका ओनर होगा। ही आल्सो गेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉस। तो अगर उसे कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसका जिम्मेवार भी वो खुद ही होगा, इसमें और कोई उसका हिस्सेवार नहीं होगा। तो पार्टनरशिप हमें पता है, पार्टनरशिप में 2 बंदे होते हैं। When the business is owned and managed by 2 or more persons, such a business is also known as partnership। तो जब बिजनेस में 2 बंदे आ जाते हैं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप कहलाता है। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड पार्टनर शेयर प्रॉफिट इक्वली और अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। तो इसमें वो कहता है कि पार्टनरशिप में जो है ना, वो आपको प्रॉफिट जो है रेशो के हिसाब से, अगर मतलब आपकी पार्टनरशिप 25% है तो आपको 25% ही उसका शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। और अगर आपकी पार्टनरशिप 50% पे है तो आपको 50% शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। दे ऑल परफॉर्म देयर वर्क और एनी वन ऑफ देम कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फिर्म is not compulsory but is optional. The type of business organization is fit for small or medium sized business. The number of partners in the form of business organization cannot exceed than 20। तो वो कहते हैं इसमें कि पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस करे तो इसकी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी नहीं है, लेकिन इसके मतलब 20 बंदों से ज़्यादा में ना हो ये पार्टनरशिप, क्योंकि छोटे बिज़नेस के लिए होती है पार्टनरशिप। तो उसमें कम बंदे ही होने चाहिए, 20 बंदे तक होने चाहिए, 20 बंदे से ज़्यादा कभी नहीं होने चाहिए। द जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉरपोरेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी
Its members are known as shareholders. Its capital is divided into small units known as share. The liability of each member is limited up to face value of share held or the amount granted by him. In our country, it is established and controlled under the Companies Ordinance 1984. The public limited company, a private limited company are its major kinds. It is fit for large scale industrial business. तो इसमें वो कहते हैं कि अब कॉरपोरेशन जो होती है, बड़ी कंपनी जो होती है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। उसमें आप जितने मर्जी या बंदे भी रख सकते हैं और इसका एक लॉ भी बनाया हुआ है उन्होंने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये कॉरपोरेशन बनाई जाती है। बुक कीपिंग में बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस transaction in book in regular and systematic matter and art of recording business transaction in the books of accounts in proper manner is called bookkeeping। तो बुक कीपिंग कहलाता है जो कि बुक मतलब कंपनी की ट्रांजेक्शन होगी जो उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो वो उसकी बुक कीपिंग कहलाएगी। अकाउंटिंग क्या है जी? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in terms of money transaction and events of financial character and interpreting the results. Therefore, difference between accounting and bookkeeping. Some people who have little knowledge of accounting may fail in differentiating between accounting and bookkeeping. Bookkeeping means the recording of transaction. The record phrase accounting, the record make phase accounting, the recording of transaction may be tuned to medical. It is also only a small part of field of accounting and probably the simplest form. Accounting includes maintenance accounting records but also designed to efficient accounting system, the performance of auditor, development of forecast, income tax work and the interpretation of accounting information. In short, a person might become a reasonably proficient bookkeeper in few weeks or month. However, to become a professional accounting requires several years of studies and experience। तो कहते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हर बुक कीपर अकाउंटेंट नहीं हो सकता, तो अकाउंटिंग के लिए थोड़ी सी नॉलेज लेना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। Financial information is necessary in order to run a business in an efficient manner. Reliable information will be available only through keeping proper books of accounts. Proper accounting is essential if money is to be borrowed for the purpose of business. The lender will only agree to lend money when he is satisfied as to the solvency of the borrower. Information available from books of accounts in the means of measuring such solvency. Cash in hand can be verified. The declaration can be detected if proper books of account are maintained. Payment of sales tax and income tax is only possible if books of accounts are maintained. In case of any dispute, books of accounts can be produced in the court law as documentary evidence. Government fixes up fair prices, formulates industrial policy, prepares economic plans, decides import-export costs, and does many other functions on the basis of accounting information available from books accounts. Branches of accounting. The following branches of accounting have come into existence in order to meet the requirement of people having interest in the business as they desire. Financial accounting. The main purpose of financial accounting is to ascertain the true result, profit or loss of the business operation during a particular period of time and to state the financial position of the business on a particular period of time. Cost accounting.
The main purpose of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured or produced by the business. It also helps the management of the business in controlling the cost by indicating available losses and wastes. Managerial accounting. The objective of this accounting is to communicate the relevant information periodically to the management of the business to enable it to take suitable decisions. Accounting principle concepts. The principles which are constitute the ground rules for financial reporting are called generally accepting accounting principle. Accounting principle may also be termed standard assumptions, convictions, or concepts. Detail is as under. The business entity concept. A business entity is an economic unit that engages in identifiable business activities for accounting purpose. The business entity is regarded as separate from the personal activities of its owner. An accounting entity, an economic unit which controls resources and engages in economic activities. An individual is an accounting entity, so is a business enterprise. It means a business has an existence separate from its owner, creditors, employee, customer, and interested parties. The going concern concept. Going concern concept means that an accounting entity will continue operation for a period of time sufficient to carry out its existing communities. Accounting period concept. Accounting is a continuous process of a business. Every businessman wants to know the result of his investment and efforts and frequent intervals. Accounting choose some shorter period to measure the result of business. Therefore, 1 year has been chosen as the accounting period. It may be 1 month, 3 months, or 6 months. Cost concept. Under this concept, fixed assets are recorded in the accounting books at the price which they are acquired. The price paid to acquire the asset is termed as cost, and this cost is a basic for all the subsequent accounting. For the asset matching concept, the matching concept is expense incurred to generate particular revenue should be matched with those revenue they have helped to generate. In otherwise, expenses incurred in an accounting year should be matched with the revenues organized in a year. Objective concept. The concept implies that all accounting transactions should be evidenced and supported by business documents, invoices, vouchers. These supporting documents from basic code of entries and traders for data realization concept. Actual concept. We should revenue be recognized under the assumption of accrual. Accounting revenue should be recognized when it is learned. The principle of recognizing revenue in the accounts only when the earning process is virtually complete, which is usually at the time of sale of goods or rendering service to customer. Consistency concept. Once a particular accounting method is adopted, it will be changed from period to period. System of accounting. The system in which accounting entries are made on the basis of amount having become due for payment or receipt. There are basically two systems of accounting: cash system of accounting, accrual system of accounting. Cash system of accounting. It is a system in which entries are made only when cash is received or paid. No entry is made when payment or receipt is merely due. For example, the rent for December 2014 has been paid till January 10, 2015. On a cash basis, rent expenses for the month December will not be recorded as the payment has not been made. The government system of accounting is mostly on the cash system. Accrual system of accounting. It is a system in which accounting entries are made on the basis of amount having become due for payment or receipt. The system recognizes the fact that if a transaction or event has occurred, its consequences cannot be
avoid it and therefore should be brought into the book in order to present a meaningful picture of profit earned or loss suffered. Explanation of accounts commonly used in accounting. तो अब आगे जी मेन बात हमारी अकाउंट्स जो यूज़ होते हैं ना अकाउंटिंग में, ये मेन चीज़ें जो हमने याद भी करनी होगी। तो ये रीड करते हैं। ऑफिस सप्लाइज, स्टैम्प, स्टेशनरी, पेपर, पेंसिल एंड लाइक आइटम आर नोन एज ऑफिस सप्लाई। दे आर एसेट व्हेन परचेज एज दे आर कंज्यूम्ड टू बिकम एक्सपेंस। ऑफिस सप्लाइज में होता है मतलब पेपर पेंसिल वगैरह हो गए, और ये मतलब एसेट होता है हमारा जब हम परचेज करके रख देते हैं, लेकिन जब हम इसे यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस बन गया ना। स्टोर सप्लाइज, सप्लाइज रैपिंग पेपर, कार्टन, बैग्स, सिमिलर आइटम यूज्ड अ स्टोर आर नोन एज स्टोर। Prepaid expenses, advance payment to the supplier seller on account of goods purchased or services before their receipts or use. These are prepaid expenses as they are considered asset until they are used expired. There should be a separate account for each prepaid expense. तो प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने पहले ही पे कर चुके होते हैं, मतलब उसके मतलब रिसीप्ट तो नहीं लेते हैं हम, लेकिन वो पे कर देते हैं, तो वो हमारा प्रीपेड बन जाता है। तो इसके लिए अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। परचेज इक्विपमेंट, परचेज ऑफ टाइपराइटर, डेस्क, चेयर, स्टील, अलमीरा एटसेट्रा कॉमनली रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। कार्ड, ऑफिस इक्विपमेंट। Debtor account receivable. Debtor are the person or customer to whom goods have been sold on credit basis and from whom the business is to receive money in near future. These are also known as account receivable. Creditor account payable. Creditor are the person or supplier whom goods have been purchased on credit basis and from whom the business is to pay money in near future. They are also known as account payable. Assets. Assets are the properties of possession of a business, both tangible and intangible, have no physical existence. Liabilities are debts or obligation of a business. Proprietor. He is the owner of the business. He is the owner of the business. He invests capital in it, gives his time and attention to it. He is entitled to receive the profit or bear loss arising out of it. Capital. It is the source of fund provided by the owner of the business. Drawings. The amount of cash or goods taken by the owner from the business for his personal are known as drawings. Withdraw भी कहते हैं इसे। Expenses. Expenses are the cost of goods and services used up in the process of obtaining revenue, salary, insurance, rent, etc. Revenue. It is the price of goods sold or services provided by a business to its customer. Sales, rent received, etc. Commission. It is a form of remuneration for services rendered by a person to another. Cash discount. It is deduction or allowance given by a creditor to a debtor if the account is paid by the debtor before the due date. Trade discount. Discount allowed by the manufacturer or wholesaler at the time of selling goods. The retailer as a deduction from the list price or catalog price is called trade discount. Purchases. In accounting language, the word purchases has special meaning when saleable goods are brought in a business. It is said that purchases have been made. Sales. The goods are purchased for selling purpose. When these goods are sold to customers as specified, it is said that sales has been made. Goods or merchandise. It refers to something in which have been purchased by a trader for resale purpose or anything which has been manufactured for selling purpose. Returns outwards. Goods once purchased may subsequently be sent back to the seller for certain its goods are defective
नॉट अकॉर्डिंग तो रिटर्न बैक होगा, जो ख़राब गुड्स होंगे उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ख़त्म, मेरे ख्याल में एक्सरसाइज शुरू होगी अब। He may return these goods to the seller. To the seller, such return goods is known as return outward, return inward. In the customer to whom goods have been sold. तो अगर हमारे गुड्स में कोई फैक्ट निकल आता है और हम उन्हें सोल्ड करते हैं तो वो डिफेक्टिव हमारे रिटर्न इनवर्ड में होंगे। बिलो स्टैंडर्ड और नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, he may return these goods to the seller. To the seller, such return goods is known as sale return. अकाउंटिंग टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस वर्ल्ड। तो ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ होने वाली हैं आगे। डेब्टर, क्रेडिटर, प्रोविजन, रिजर्व, डाउटफुल डेट, गुड्स स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, बैड डेब्ट्स, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, अलाउंस फॉर डाउट्स, फुल डेब्ट्स, मर्चेंडाइजेस, inventory, notes receivable, accrued expenses, accrued income, uncollectible expenses, net income, income statement, fiscal year। पहला चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉरी दूसरा चैप्टर। पहले में डेफिनेशनें थी, वैसे मेन चैप्टर तो अभी स्टार्ट हो रहा है। What is an event? Event क्या है? In ordinary language, event means anything that happen in human life, full of events. So many events take place in the family and social life of person. The events may be classified into two types: monetary events, events which are related with money, which change the financial position of a person, are known as monetary events. For example, daily shopping, marriage ceremony, birthday, anniversary, marriage anniversary, etc. Non-monetary events, events which are not related with money, which do not change the financial position of a person, are known as non-monetary events. For example, winning a game, delivering a lecture in a meeting, etc. Features: to become a transaction, an event must have the following features: there must be two parties. No transaction is possible without two parties. Just takes two hands to clap, so it two parties for a transaction to take place. There cannot be a giver unless there is a receiver. Suppose X borrows rupees 10,000 from a bank. This is a transaction since there are two parties here, X and bank. The event must be measured in terms of money. An event will not be regarded as transaction unless it is capable of being measured in terms of money. The event must result of property or service. Suppose we buy a motor car from Salim for rupees 40,000. The result of transfer of property for Salim to us as it is transaction again. Suppose we sell it or employ 2,000. The result is transfer of service. The employer renders service and we receive it, so it is a transaction. The event must change the financial position of the business. Transaction takes place when there is a change in financial position of the business. The change in financial position may be of 2 kinds: quantitative changes, qualitative changes. Quantitative changes: this change the total value of assets and liabilities of business concern. Suppose machinery of rupees 50,000 is destroyed. The reduce the total value of the assets of the business as a result. The financial position changes and hence it is a transaction. Qualitative changes: this cause increase or decrease in different elements of assets or liabilities, but the value of total assets and total liabilities remains unchanged. Suppose we buy machinery worth rupees 50,000. This results in exchange purchase cash rupees 50,000 goes out of for possession, and at the same time machinery of an equal value comes into our possession. This does not change the total value of our asset, but this causes a qualitative change in our financial position, hence it is a transaction.
Business transaction. A business transaction involves exchange of values between two persons. An exchange means giving and receiving of equal value. Thus, every transaction has two aspects, giving and receiving. Following are the two types of transaction: cash transaction, credit transaction. Cash transaction involves immediate payment or receipts of cash. Credit transaction, when we sell or purchase something, payment or receipt is postponed for future date. Such transaction is called credit transaction. This concept is based on the principle of duality. Every business transaction twofold aspects: efforts and rewards, sacrifice and benefits. For an exchange of value, two parties are required, a giver and receiver. Thus, firm sell goods for rupees 800 and two simultaneously place it's on the seller. Delivery: the goods were rupees 800, receipts of cash rupees 800. For the purchaser, receipts of goods worth rupees 800, payments of cash rupees 800. For the above said example, it is obvious that every transaction affects two accounts and involves twofold simultaneous effect on each part. Technically speaking, for every debit there is a credit asset transaction. Giving account and receiving account equally, the assets of a business entity will always be equal to its equities. Total asset is equal to liabilities plus owner equity. Accounting equation. A fundamental characteristics of every balance sheet is that the total figure of assets is always equal to the total liabilities plus owner equity. The agreement or balance of total assets within the total liabilities and owner equity is one reason calling financial statement a balance sheet. But why do total assets equal the total liabilities and owner equity? The answer is error. The rupee total on the two sides of a balance sheet are always equal because these two sides are merely two views of the same business property. The listing of assets shows us what things the business owns. The listing of liabilities and owner equity tells us who supplies these resources business and how much each group supplied. Therefore, the total claim of the creditor plus the claim of the owner equal to the assets of the business. Assets is equal to liabilities plus owner equity. Asset is equal to 3 lakhs. Liability is equal to 80,000. Owner equity is equal to 2,20,000. The equation reflects the fact that outsider and insider have interest in all of the business. When the amount of two of these elements are known, as the third can always be calculated. Assets minus liabilities is equal to owner equity. 3 lakh minus 80,000 is equal to 2,20,000. Capital expense, drawing investment revenue. तो फ्रेंड्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The following transactions were completed
during the month of March 21st. So the following transaction has been completed during the month of March 21st. तो ये है जी हमारी पहली इक्वेशन। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। पहले तो इसका लिख लेना है सब कुछ आपने। तो मार्च 1 को हुई है जो ट्रांजैक्शन पहली 01 को। ये है जी ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना है कैश? 1 लाख। 1 लाख मार्च 2 को ही है, नहीं मार्च 4 को ही है, सॉरी। परचेज बिल्डिंग विद कैश। विद कैश। तो ये है हमारे पास 50,000 उसके बाद मार्च 9 को मार्च 09 परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ये हमारे पास 20,000। उसके बाद मार्च 17 को परचेज लैंड ऑन क्रेडिट। लैंड ऑन क्रेडिट। तो ये कितना है? 15,000 है ये 3। उसके बाद मार्च 20 आ गया। सोल्ड पार्ट ऑफ इक्विपमेंट। पार्ट ऑफ ₹12,000 on credit। March 24 paid ₹7,000 to creditor। March 29 received ₹8,000 from debtor।
तो अगले पेज पे अब इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल नीट सा इसका फॉर्मेट बनाना होता है ताकि क्लियर हो। इधर ऊपर हेडिंग दे देंगे हम। The following transactions statement of accounting equation. डेट भी डाल देते हैं मार्च 31 को ये स्टेटमेंट हुई है 16 को। अब फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। ये सीधा कर लेते हैं, नजर आए ताकि। अब इधर जो है हम लायबिलिटीज, पहले तो डेट आ गई, डेट। अच्छा जी, डेट के बाद इधर ये क्लोज, इसके बाद अभी हमारे ब्लॉक्स बनेंगे जो कैश के, डेबिट के, क्रेडिट के, लायबिलिटीज के, सब कुछ इधर ही होगा। तो इसे भी क्लोज कर देते हैं आप। अच्छा, एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। एसेट्स लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो लायबिलिटीज में हमारा क्रेडिट आता है, उधार आती है, कैपिटल आता है हमारा ओनर इक्विटी में। किसी बिजनेस का एक कैपिटल होता है, जैसे कुछ उधार होती है, कुछ कैपिटल होता है। तो इसके दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं। क्लियर नहीं नजर आ रहा। तो ये हमारा बन गया। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया जी कैश,
बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लैंड, एक्टर, कैरेक्टर। कैरेक्टर। तो अब हमारी पहली ट्रांजैक्शन होगी इधर कैश की। तो कैश मार्च 1 को आया हमारे पास 01। मार्च 01 को आया हमारे पास 1 लाख। $50,000। बिल्डिंग 50,000। इक्विपमेंट, लैंड, ट्रैक्टर, क्रेडिट। तो कैपिटल हमारा हो गया 1 लाख। बैलेंस हुआ जी मार्च 09 को फिर से ब्लॉक। $50,000। $50,000। इक्विपमेंट आई हमारे पास 20,000 की। $20,000 गया क्रेडिटर में। कैपिटल हो गया 1 लाख। फिर बैलेंस हो गया मार्च 17 को ब्लॉक आ गया एक। $50,000। $50,000। $20,000। फिर लैंड नीचे आ गई थी 15,000 का। क्रेडिट में चला गया ये भी 20,000 जमा 15,000। $1 लाख कैपिटल। उसके बाद अब बैलेंस हुआ है G20 को।
50,000, 50,000, 20,000, 12,000, 15,000, 12,000, 35,000, 1 lakh. फिर बैलेंस हो गया मार्च 24 को 50,000, 7,000, 50,000, 8,000, 15,000, 12,000, 8,000, 28,000, 43 over 8,000, 50,000, 8,000, 15,000, 12,000 over 8,000, 28,000, 1 lakh. Final balance 51,000, 50,000, 8,000, 15,000, 4,000, 28,000, 1 lakh. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन अब कंप्लीट होने लगा है। सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने किया क्या है।
सो फार्मूला डालेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। एसेट्स है हमारे पास 1,28,000 रुपीज़, 1,28,000। लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी है 28,000 प्लस 1 लाख। इज इक्वल टू 1,28,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये जैसे मैंने स्टार्ट किया, शुरू में उन्होंने बताया कि मार्च की ये जो इक्वेशन है इसे आपने सॉल्व करना है। तो ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये देखें ओनर ने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जो कि 1 लाख था उसके पास, वही उसका कैपिटल होगा, वही उसका कैश होगा। मार्च 1 को स्टार्ट किया, ये डेट आएगी इधर। तो ये फॉर्मेट आपने याद करना है, ये फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद दोबारा कहते हैं परचेज्ड बिल्डिंग विद कैश, हमने बिल्डिंग का ब्लॉक बना दिया अलग से। तो बिल्डिंग उन्होंने कितने के लिए, 50,000 के लिए। तो 50,000 हमने डाल दिया, कैपिटल वही सेम रहा क्योंकि कैपिटल हमारा वही है। उसके बाद दोबारा आगे मार्च 9 को परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, उधार पे इक्विपमेंट लिए हमने क्रेडिट पे। तो वो हमने उसका अलग से मतलब इक्विपमेंट का ब्लॉक बनाना है। ये 20,000 क्रेडिट पे इक्विपमेंट ले लिया। परचेज लैंड ऑन क्रेडिट, लैंड का अलग से बना दिया है। फिर ये मार्च 17 को ये देखें 15,000 का लैंड लिया उन्होंने, कैपिटल सेम जा रहा है अभी तक, कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होगा, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो लैंड ऑन क्रेडिट लिए 15,000 का। उसके बाद मार्च 20 की इक्वेशन हुई है, ये सोल्ड अ पार्ट ऑफ इक्विपमेंट, 12,000 की इक्विपमेंट बेच दिया जो ली थी। तो वो जो इक्विपमेंट ली थी उसकी 12,000 की बेची, तो 8,000 की हमारे पास इक्विपमेंट आ गई है। उसके बाद डेप्टर ने हमारा 8,000 देना है, 12,000 देना है, तो ये हो गया एक। उसके बाद पेड ₹7,000 टू क्रेडिटर, हमने उधार दे दी 7,000 जो कि उधार थी हमारे 20,000। ये जो उधार थी हमारी 20,000, इसमें से हमने दे दी कितनी ₹7,000। ये आ गई जी इक्वेशन हमारी मार्च 24 की। ठीक है, ये 7,000 हमने दे दी अपने कैपिटल इसमें से, कैश में से, क्योंकि और तो हमारे पास है कुछ नहीं, अभी कैश ही बचा हुआ है। अगर हमने कुछ लिया होता इधर से तो इधर से दे देते, लेकिन इधर नहीं है, कैश में ही हमारे पास, हम कैश में देंगे। उसके बाद रिसीव ₹8,000, तो अब रिसीव हुआ है, ये देखें 20,000 था ना हमारा डेप्टर के पास। तो उसके बाद हमारा जो टोटल हो गया है 8,000 और हो गया है हमारा डेप्टर के पास, तो ये 28,000 हो गया है। तो ये लाइबिलिटीज़ बन गई हमारी 1,28,000 की लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी कैपिटल, ये टोटल हमारा बन गया 1,28,000। ये देखें इसको मिला के। और अगर हम एसेट्स का देखें तो एसेट्स भी हमारे 1,28,000 ही बनेंगे। ये देखें 51,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 15 प्लस 4, अगर इसका इक्वल करें तो ये 1,28,000 ही बनेंगे एसेट्स। तो ये आपने देख लेना है कि ये चीज़ और ये चीज़ जब सेम आ जाए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी आ जाए, तो आपने ये देख लेना है कि आपकी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने कर लिया। कल इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि वो इससे भी ज़्यादा मतलब आपको समझ आएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा आप इस पर महारत हासिल करेंगे। ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस के साथ है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर मतलब इसको कर सकते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिस करते रहना है। कल इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।